Hello students, welcome back to your grammar session. Now today we will start with new chapter, that is chapter 14, adverbs. Okay, what is adverbs? Okay, so first we will see कि adverb क्या है. An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb. Okay, that is how an action is डन. ओके, एडवर्ब क्या है? बेसिकली एक सेंटेंस में से हमें ये पता चलता है कि उसमें एक्शन वर्ड कौन सा है. ओके, जो भी एक सेंटेंस है तो उसमें एक्शन हो रही है, वैसी चीज़ हमें क्या दिखाई दे रही है, कौन सी चीज़ है. तो ये जो वर्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्शन. Action verb, that is adverb. Okay, again I am repeating, an adverb is a word that adds something to the meaning of a verb. Okay, verb के कुछ meaning में add करेंगे, that is adverbs. Okay, now as usual, before starting the chapter in detail, I would like to show you few examples. The bird sang sweetly. Okay, and also pay attention more on the highlighted word. The students are sitting quietly. He hit the ball hard. Roshan hugged his brother tenderly. He is coming by flight, so he will reach here soon. Okay, now with the above sentences, the words sweetly, quietly, hard, tenderly and soon are describing their respective action. Okay, क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है. जैसे बर्ड तो गाना गा रहे हैं, लेकिन कैसे गा रहे हैं? स्वीटली. ओके, कि ये एक जो बॉय है उसने क्या किया है? बॉल को हिट किया है, लेकिन कैसे हिट किया है? हार्ड. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड स्वीटली टेल्स अस हाउ द बर्ड sang, and so sweetly is the word which adds more meaning to the verb sang. Okay, जो वर्ब है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? sang. ओके, तो उसको क्या कर रहा है? मीनिंग दे रहा है स्वीटली. देन स्वीटली इज एडवर्ब, देयरफॉर स्वीटली इज एन एडवर्ब. ओके, so now there are kind of adverbs. So there are basically in this chapter 4 kinds of adverbs, that is adverb of manner, that is how adverb, adverb of time, when adverbs, adverb of place, where adverb, and adverbs of frequency, how often adverbs. Okay, now we will see all the kinds of the adverbs in detail. First we will see adverb of manner, that is how adverb. Okay, now the old man walked slowly. He ran quickly. The baby slept soundly. He danced gracefully. Okay, in the above sentence the word slowly, quickly, soundly and gracefully describe how certain actions are done. Okay, जो actions हो रही है वो कैसे हो रही है. Okay, how. These words are adverb of manner or how adverb. Okay, क्या देख रहे हो आप? देखो द फर्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली. जैसे ओल्ड मैन चल तो रहा है, लेकिन कैसे? ओके, हाउ. तो ही इज वॉकिंग स्लोली. ओके, ही रैन क्विकली. ही मीन्स कोई है जो चल रहा है. ओके, भाग रहा है, तो कैसे? क्विकली. ओके, सो दिस इज हाउ एडवर्ब्स वर्क. ओके, and they are placed after the verbs they describe. Okay, your walked, ran, slept, danced are all verbs, और verbs के पीछे हम लोग ने क्या लगाया है? adverbs. Okay, and maximum time the adverbs of a manner end with ly, but sometimes it does not end with ly at the end. Okay, for example, the athlete ran fast, he worked hard, Manik spoke well. Okay, and many more. But you can see in this PPT that every adverb is ending with ly, but there are few that will not end with ly. Okay, that I gave you the example orally. Now we will see adverb of time. An adverb of time tells when or at what time an action takes place. Okay, कब और कहाँ, कौन से टाइम पे ये जो एक्शन है वो हुई है, वो बताएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, दैट इज व्हेन. ओके, नाउ सी द एग्जांपल्स अगेन. रिया वाज स्लीपिंग देन. द सन इज राइजिंग नाउ.
They get up early in the morning. Yesterday I went to the park. Tomorrow we will go to the library. Okay. Now in these sentences, then, now, early, yesterday, tomorrow are adverbs. Okay. Since they tell when certain actions are done, they can be called when adverbs or adverb of time. Okay. See, for example, Ria was sleeping. Then, okay, कब सो रही है? then the sun is rising now. सन कब राइज हो रहा है? नाउ. ओके, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि कब हो रहा है. ओके, व्हाट टाइम. फॉर एग्जाम्पल सी, येस्टरडे आई वेंट टू द पार्क. येस्टरडे, मैं कल, ओके, कल गई थी या कल गया था. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कब. ओके, when adverbs. Okay, so this is called adverb of time. Okay, now we will talk about adverb of place. Okay, now Vihan stood there. Okay, the word there tells where Vihan stood. Okay, now Sia and Winnie are playing outside. The word outside tells where Sia and Winnie are playing. The traveler looked up. Okay, the word up tells where the traveler looked. Now since they tell where certain actions are done, they can be called where adverbs or adverbs of place. Okay, adverbs of place means कहाँ वो चीज़ हो रही है. Okay, and adverb of the place tells where an action takes place. Okay, जो action है वो कहाँ पे हो रही है, अगर वो जानना है, अगर वो दिख रहा है सेंटेंस में, तो हम क्या कहेंगे उसे? adverb of place. मीन्स द ट्रैवलर लुक अप. ओके, अप, अगर उसने ऊपर देखा है तो वी कैन से दैट इट इज़ अ प्लेस. ओके, अप. इफ आई विल से द ट्रैवलर लुक्ड डाउन, सो इवन डाउन इज अ प्लेस, so it will be an adverb of place too. Okay, Sia and Winnie are playing. Okay, Sia and Winnie are playing outside. प्ले तो दोनों प्ले कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे? आउटसाइड. ओके, और इट वी कैन से Sia and Winnie are playing inside. ओके, तो हमें पता चल रहा है कहाँ वो लोग खेल रहे हैं, अंदर खेल रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट adverb of place, also called where adverb. Okay, adverbs of frequency. Okay, how often adverbs. Now an adverb of frequency tells us how often an action happens. Okay, जैसे we always go for a walk after dinner. Okay, always. He never comes late to the class. Never. Grandmother sometimes tells fairy tales. Okay, sometimes. Now in the sentences, the words always, never, sometimes are adverbs. Okay, क्या है? Adverbs है. Now since they tell how often or how frequently certain actions are done, okay, they are called how often adverbs or adverbs of frequency. Okay, कैसे हो रही है, ओके, कितनी फ्रीक्वेंट हो रही है, कितनी रैंडम हो रही है, अगर हमें वो पता है तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड हाउ ऑफन एडवर्ब्स और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, मैनी टाइम्स. ओके, अगर ऐसा कुछ वर्ड्स यूज हुआ है तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, द अदर एग्जाम्पल में बी once, daily, twice, okay, often, always, never, sometimes. Okay, so all these are what? Adverbs of frequency. Thank you.